बोला थोड़ा सा 2026 नहीं दिख रहा है, इस साइड का ये पार्ट नहीं दिख रहा है। अच्छा वो बस उसी से मैटर है। ठीक, चले कहाँ है? चालू करें? ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि। हम लोग आज से करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। आई नो थोड़ा बहुत वहां पर टेक्निकल इशू के कारण हम लोग मंडे से क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब मंडे से क्लास कंटिन्यू नहीं हुई है, उसके कारण मैं जो पुरानी कुछ 2-3 दिन का जो रिवाइंड है वो लेकर के आई हूँ। ठीक है, चलो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का रिवाइंड 11 और 13 अप्रैल का। ठीक है, बताना है वो। ठीक है, तो पहले मैं एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं द बैंकिंग टाइम से हूँ और हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि हाँ करंट अफेयर्स क्या है क्या नहीं है। हम लोग जो डेली हेडलाइंस होती है वो कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ हर रोज जो मैं पुराने न्यूज लेकर के आए रहूंगी वो वाली जो न्यूज रहेगी उसको हम लोग रिवाइंड करके देखेंगे। ठीक है, 2-3 दिन का रहेगा जिससे कि एक रिविजन होते रहेगा। ठीक है, और इसके बाद जो हम लोग की डेली जो 13 की है 14 की है वो वाली हेडलाइंस जो होंगी उसको कवर करेंगे। ठीक है, अब 15 है आज, तो आप सोच रहे हो कि तो 14 का क्यों कवर करेंगे, बट जो भी इवेंट्स तो 14 को हो चुके हैं वही हम लोग 15 को कवर करने वाले हैं। तो व्हेन आई मीन 14 मैं कह रही हूँ, दैट मीन्स कि हम लोग 14 के जो इवेंट्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास कॉपी और पेन साथ में नहीं होनी चाहिए, आपके पास एक नोट्स होने चाहिए जिसमें आप लिख करके रखो कि हाँ ये हेडलाइन आज हमने पढ़ी है। एक प्रॉपर डेट होनी चाहिए कि हाँ आपको ये याद रहे कि हाँ हमारे यहाँ इस दिन हमने ये वाली न्यूज को पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब आए हम लोग ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस अंबिकापुर में हम लोग करवाते हैं, जहां पर हम लोग क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स जो सुबह 7 बजे क्लास लगती है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास जो भी सब्सक्रिप्शन आप बाहर से लेकर के ऑनलाइन पढ़ रहे होगे हम यहाँ पर ऑफलाइन आपको प्रोवाइड करते हैं। आपके पास सारी टेस्ट बुक्स जो भी आपको लगती होंगी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको डेली मॉक चाहिए, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ाई करनी है और बैठ करके कंसिस्टेंट रहना है कि अगर आज कोई शीट आई है तो वो सॉल्व होनी चाहिए, आज कोई शीट आई है तो वो रीड होनी चाहिए, और आज कोई शीट आई है तो वो इतनी अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए कि कल मैं पूछूं तो आपको कोई भी उसमें गुंजाइश ना रहे। ठीक है, अब जो हम लोग की मेन बात है, 15 मिनट्स का इतना बड़ा इंट्रो, आई डोंट थिंक आई एम अ यूट्यूबर तो आई कैन नॉट डू 15 मिनट्स का इंट्रो कि हाँ मेरा कोचिंग ये, मेरा कोचिंग वो। हम लोग शुरुआत करेंगे पढ़ाई से। फर्स्टली वी विल फोकस ऑन व्हाट वी नीड टू स्टडी। कंसिस्टेंसी इज मस्ट। आप लोग इसी उमंग और मोरल वैल्यू के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स रिवाइंड है 11-13 अप्रैल का।
यहाँ पर मैंने ना ज़्यादा हेडलाइन को डिटेल करने की कोशिश नहीं की है, ऑल्दो 14 और 13 के जो न्यूज़ है वो थोड़ी सी डिटेल वे में मैंने बताई हुई है, लेकिन ये जो 11 से लेकर के 13 की न्यूज़ है वो मैं हेडलाइंस की तरह लेकर के चल रही हूँ, कंसिडरिंग कि आप शायद पहले से पढ़े होंगे, अगर आप नहीं भी पढ़े हो तो भी अगर एग्जाम थोड़ा दूर है ना तो आपके पास जितना मटेरियल होना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए उतना भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप पीडीएफ ओपन करना, जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना, नीचे मेरे पास टेलीग्राम का जो क्या बोलते हैं यूजर नेम वो वहां पर प्रोवाइड किया रहेगा, आप उसको ओपन करना, आपको मिलेगा लिंक, उसमें आप ओपन करके टेलीग्राम चैनल में जितनी भी पीडीएफ है जो भी है प्रैक्टिस है सब देख सकते हो। उसके अलावा आपके पास जो भी क्वेश्चन जो क्विज कहते हैं क्विज भी रहेगा वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, आज नहीं कर पाऊंगी कल कर पाऊंगी, आई एम नॉट मेकिंग एनी प्रोमिसेस बट आई एम श्योर कि कभी ना कभी आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर क्या है, बैंकिंग फाइनेंस और इकोनॉमी की न्यूज है। प्रधानमंत्री मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। अब ये जो है ना एब्रिविएशंस बोलते हैं इसे, जो छोटा मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा हुआ है वो क्या बोलते हैं एक्सपैंड होता है, तो आपके पास ये चीज याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में चलो फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई करंट अफेयर्स वी आर लर्निंग, ठीक है। जीके वो तो आपको पता है ही कि जीके हम लोग को पढ़ना ही है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है हमको, करंट अफेयर्स पढ़ना है हमको, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है, सारी चीजें पढ़नी है। और जो बेसिक जो हमारे बैंकिंग से रिलेटेड हमारे सेक्टर से रिलेटेड जो भी फुल फॉर्म्स हैं वो हमको पूरी तरीके से याद होने चाहिए, ठीक। तो हम लोग को ये सारी चीजों को ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है, जो प्रधानमंत्री मुद्रा है कंप्लीटेड 11 ईयर्स ऑन April 8, डिसबर्समेंट क्या है ओवर 40.07 लाख करोड़ वाया 57.79 करोड़ लोन्स सिंस लॉन्च। The categories Shishu up to 15,000, Kishore 15,000 to 5 lakh, Tarun 5 lakh to 10 lakh, and New Tarun Plus. Note 66.66 of the total loans were given to women entrepreneurs. अब आप ये चीज समझो कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, आपके पास नोट्स एक्चुअली इस फॉर्मेट में होने चाहिए। I will show you what the slides are about. आपको आगे पता चलेगा कि क्या क्या स्लाइड्स में हमने अवेलेबल किया हुआ है, बट ये जो है दिस इज द प्रॉपर नोट्स हाउ यू हैव टू मेक इट नोट्स इन योर कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, नेशनल पेंशन सिस्टम क्या अपडेट आया है उसके अंदर। तो नेशनल फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA अप्रूव्ड पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू स्पॉन्सर अ न्यू पेंशन फंड। एक न्यू फंड जो है वो आने वाला है। आई डोंट थिंक इतना इंग्लिश आपको नहीं आता होगा कि ये ना बने, बट स्टिल मेरे को पता है कि अगर आप बेसिक, आज आपका फर्स्ट डे है करंट अफेयर्स करने का, तो आज के दिन आपको इतना पता होना चाहिए कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर आज आपका फर्स्ट डे है तो आपको पता होना चाहिए हम 4-5 सेक्टर्स से जो होता है न्यूज को एक साथ इकट्ठा करते हैं और उसको बैठ करके क्या बोलोगे आप, जो हमारे सेक्टर से रिलेटेड है, जो हमारे एग्जाम्स में आने वाला फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो न्यूज है वो क्या है, एनपीएस से है और दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, दिस इज क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा एप्ट क्वेश्चन फॉर अस, ठीक है। तो ये हम लोग को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो नाउ यू हैव टू मेक अ स्टार इन योर नोट्स सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ओके। नाउ अब ये क्या है, जो फंड है वो एक न्यू फंड जो है वो वहां पर अवेलेबल किया गया है। स्ट्रक्चर क्या है, दिस न्यू कंपनी विल मैनेज इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब ये वाला जो न्यूज है आपको पता है कि यहाँ पर ये जो न्यूज है वो इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या करोगे, वहां पर स्टार बना करके रखोगे, ओके। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत बिल पे लिमिटेड, अब उसके बारे में कोई न्यूज है हमारे पास। एक्सिस बैंक has been onboarded to the Banking Connect platform. The platform now has 8 major banks including State Bank of India, HDFC and ICICI and 11 payment aggregators. क्या है, companies that help merchants accept payments. ये तो है हमारे पास, ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर हमारे पास 8 मेजर बैंक तो अवेलेबल हुए ही हैं, इसके साथ साथ 11 पेमेंट एग्रीगेटर्स भी वहां पर इंक्लूड किए गए हैं। क्या है, ये ऐसी कंपनीज हैं जो क्या कर रही हैं, मर्चेंट्स को एक्सेप्ट करवा रही हैं पेमेंट्स। तो दिस इज अ लिटिल सॉरी, अगर ये जो न्यूज है वो इसलिए नहीं है कि अच्छा आपको पढ़ना है कि हाँ ये जो एनपीसीआई है उसने क्या करवाया है, दिस इज अ न्यूज कि एनपीसीआई ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास, इसमें कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड की गई है, ठीक है, अपडेट किया गया आपके लिए, ठीक है।
एक्सिस बैंक हैज बीन ऑनबोर्डेड टू द बैंकिंग कनेक्ट प्लेटफॉर्म, आपको उसमें एक चीज और ऐड करी गई है, ठीक है। यहाँ पर ये जो 11 पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, ये हम जो जब पेटीएम वाले क्यूआर पे स्कैन करते हैं फोन पे से और जीपे से, जब ऐसे हम लोग पेमेंट कर रहे होते हैं ना, दैट इज व्हाट दे मीन, ओके। नाउ CSB बैंक, फॉर्मली कैथोलिक सीरियन बैंक, लॉन्च्ड स्मार्ट सेव अकाउंट। अब देखो CSB बैंक ने क्या किया है, एक लॉन्च किया है, क्या चीज लॉन्च की है, स्मार्ट सेव अकाउंट लॉन्च की है। The first dedicated retail product includes an auto sweep facility, automatically moves extra savings into fixed deposits. अब ये क्या काम कर रहा है, ये एक ऐसा ऑटो स्वीप फैसिलिटी, स्वीप मतलब क्या होता है, आप समेट इकट्ठा कर रहा है, राइट। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है जहां पर आपकी जो एक्स्ट्रा सेविंग्स जो हुई हैं वो आपके FD, आपके फिक्स डिपॉजिट में ऐड किया रहेगा, ठीक है, विद अप टू 7% इंटरेस्ट, आपके पास 7% इंटरेस्ट भी आपको अवेलेबल रहेगा। डन। नाउ इंडिया टेक फंडिंग ट्रैक्शन रिपोर्ट, अब ये क्या है, क्यों है, वो देखेंगे। इंडिया रैंक 4th ग्लोबली फॉर द टेक स्टार्टअप फंडिंग्स, that is $11.7 billion in financial year 2026. अब टॉप 3 क्या है, मतलब हम अगर 4th है तो we have to understand what the other 3 that are above us, वो हम लोग को पता होना चाहिए। सर दीदी, ठीक है, टॉप 3 क्या है, USA, UK and China. So above us we have USA, then we have UK and then we have China, and after China India is ranked as 4th. Is that clear? Now national and state affairs. Now we have concluded what banking and economy news were there, but now we have to see what national and international affairs, whatever is going on in the nation. Right now we have to deal with what the nation is doing. Okay. New reports in Telangana. The Ministry of Civil Aviation approved development of Warangal Airport at Mamnoor and Adilabad Airport. Adilabad will be built by the Ministry of Defense and used by both civilians and the armed forces. What are civilians, what are armed forces, which is I don't think we have to understand. The main thing that the news is covering, that is तेलंगाना में जो नया एयरपोर्ट बना हुआ है, वारंगल एयरपोर्ट, ओके, उस वाले एयरपोर्ट में क्या चीजें हो रही है, 2 चीजें यूज हो रही है, क्या क्या, आप सिविलियंस के लिए भी यूज करने दे रहे हो, आप आर्म फोर्सेज यानी कि आर्मी के लिए भी यूज करने दे रहे हो, when and this is what sanctioned by who, by Ministry of Civil Aviation. Okay. NHAI क्या है, हम लोग जो हाईवे, नेशनल हाईवेज देखते हैं उसके अथॉरिटी है, ओके। तो NHAI ने क्या किया हुआ है, आरोग्य वन से रिलेटेड एक न्यूज है, क्या है, डेवलपिंग हेल्थ फॉरेस्ट along national highways. Phase 1 involves planting 67,462 medicinal trees like neem, amla and jamun across 11 states including Chhattisgarh. अब क्या बात हुई है यहाँ पर, NHAI ने एक चीज क्या की है, हेल्थ फॉरेस्ट मतलब बनाने का एक वो किया है, और यहाँ पर फेज 1 जो है, अभी शुरुआत हो रही है, तो आप एक एक फेज में काम करते हो, एंड every that authority that starts something, a development, they will have phases like first phase, second phase and the final phase, whatever their phases are. वहां पर क्या होगा, आपको पहले बताएगा कि पहला स्टेप्स क्या लेने वाले हैं, and the next steps what they are going to take. So phase 1 involves planting 67,462 medicinal trees. What medicinal trees they are going to plant? This is neem, amla and jamun across 11 states including Chhattisgarh. Chhattisgarh will also have medicinal plants. So anyone who is studying for RRB, ठीक है, तो आपको अपने स्टेट के भी न्यूज को कवर करना होता है, ज्यादा अच्छे से कवर करना होता है. So everyone who is applying from Chhattisgarh, they have to understand this news as well. इसके बाद साइबर सिक्योरिटी अलायंस, ये नेक्स्ट न्यूज है, क्या है वहां पर, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है इंडिया का एंड द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है, वो क्या है, उसने साइन किया है एक MOU. अगर आप पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, इट इज अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. दिस इज व्हेन टू कंपनीज have agreement together, and the agreement is to bond with each other, and we have this conditions and that conditions, and they both bind together. Okay, तो यहाँ पर ये जो MOU है वहां पर बताया हुआ है
क्या करने के लिए एमओयू साइन किया गया है? टू शेयर डेटा एंड स्टॉप बैंक फ्रॉड्स। तो बैंक फ्रॉड्स को कम करने के लिए, ऑलमोस्ट खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया है? अपना डेटा शेयर करने की बात रखी है। नाउ इंटरनेशनल एंड डिफेंस न्यूज। इंटरनेशनल न्यूज देखो, डिफेंस यहाँ पर यूज करना नॉट, इट इज नॉट सार्कास्टिक, ओके। इंटरनेशनल जो न्यूज है वो काफी ज्यादा डिफेंस में चल रही होती है, ठीक है। क्यों इंटरनेशनल डिफेंस में चल रही है? बिकॉज यू नो दैट द वॉर इज गोइंग ऑन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनल न्यूज जो है वो ऑलमोस्ट डिफेंस न्यूज के लायक हो गए हैं। दैट इज अ जोक। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत ज्यादा हार्ड टाइम्स है फॉर अस, फॉर अदर कंट्रीज एज वेल। हम लोग पहले न्यूज को समझ लें। एक्सरसाइज साइक्लोन 4, a 9-day joint special forces military exercise between India and Egypt began at the Rangers Forces headquarters in Egypt, ठीक है। यहाँ पर एक क्या हुआ है? एक साइक्लोन 4 करके एक एक्सरसाइज शुरू की गई है। व्हाट दिस एक्सरसाइज इज अबाउट? दिस इज अ 9-day joint special force military exercise। मतलब कि दो जो कंट्रीज हैं, इजिप्ट एंड इंडिया, दे आर कंसिडरिंग टू हैव एन एक्सरसाइज दैट विल हैव they will have a joint special force, right? They will have a practice that is understandably necessary, I think, and India and Egypt will have it where in the Rangers Forces headquarters in Egypt, okay. Meta news spark. What this news is about? Meta, the company that owns Facebook and WhatsApp, we know that what Meta is. They लॉन्च अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इन्होंने एक न्यू एआई को क्या बोलते हैं, डाला हुआ है, न्यू शुरुआत करी हुई है। एंड व्हाई दिस इज केपेबल ऑफ एडवांस्ड रीजनिंग विच विल रिप्लेस ओल्डर लामा मॉडल्स, ठीक है। तो आप कभी भी देखे होगे ना, आपका मेटा एआई जब आ रहा होगा उसके बीच में पावर्ड बाय लामा ऐसा करके मिला होगा। कभी भी आप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाने वाले बच्चे हो गए, ऐसा तो होगा नहीं कि कोई नहीं चलाता होगा, but if you are not using, that is also good because it is a distraction. I understand कि बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं और आप जब पढ़ने बैठे होते हो डेडिकेशन से तो बहुत सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली होती है। इट इज बेटर टू लेट देम गो than to have a time कि आप उसको टैकल करो, राइट। I was never this social person, I never used to post, I never used to be this reel making person, but now that it is necessary and I have to do this, तब मैं इतना ज्यादा एक्टिव हुई हूँ। unless and until I don't think it is necessary to put yourself into that position कि आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो because it is your social pressure कि नहीं यार करना ही होगा, नहीं तो it is not, you are not up to the mark or you are not updated with the latest Gen Z box, okay. So it is good for you if you're using it. If you're not using it, is also good for you. Whatever goes for you, whatever works for you is important. And since I am understanding how people's mind work, I understand कि आपको अगर use करना है तो it is on you, but अगर नहीं use करना है, that is also on you. AI is also very dangerous, very this, very that, I am hearing these days. But if a human made program is working for you to make yourself better, I don't think it is a harmful thing. It is the humans only who are harmful, as you are not using it correctly, maybe that's why it feels कि आपके लिए वो नुकसानदायक है, okay. Now coming back to the topic, जो लामा मॉडल है वो पुराना वाला था और अब जो मेटा एआई है वो एक नया मॉडल यूज करेगी फॉर देयर एआई मॉडल, ओके। Next is appointments, science and sports. What appointments and science and sports, whatever work is going on, that we have to understand. Bharat Petroleum Corporation Limited, BPCL, the appointments committee of the cabinet, जो appointments के committee के जो cabinet जो पूरा है, named Sanjay Khanna, ठीक है, as the new chairman and managing director of this Maharatna public sector undertaking. Now there are a lot of bold words that you are not understanding, so I will be making you understand them. यहाँ पर हमारे पास भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक न्यूज है, इज दैट क्लियर? इस न्यूज में हमें पता है कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने, जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी है, उसने क्या किया है
नेम किया है संजय खन्ना को। संजय खन्ना इज अ पर्सन जो क्या बन गए हैं अब एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ दिस महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इज दैट क्लियर? यहाँ पर संजय खन्ना को हमने, sorry not me, they have named him as new chairman and managing director of public sector undertaking. Okay, अब इसरो के बारे में है कोई न्यूज? ISRO जो बोल रहे हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन गगनयान मिशन। ओके, तो देयर इज दिस न्यूज अबाउट गगनयान मिशन सक्सेसफुली फिनिश्ड the integrated airdrop test 2 in Sriharikota, आंध्र प्रदेश। अब इन्होंने क्या किया है? कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 2। ओके, दे हैड बीन struggling, or maybe this was the not the first one, I think, and they have completely and successfully finished it. An Indian Air Force Chinook helicopter dropped a simulated crew module into the sea to test parachute landing systems. अब IAF ने क्या किया है? एक चिनूक हेलीकॉप्टर ने क्या किया है? एक सिमुलेटेड क्रू मॉड्यूल को किया है, सी में ड्रॉप किया है टू टेस्ट वेदर पैराशूट लैंडिंग सिस्टम्स जो है वो कंप्लीटली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। स्पोर्ट्स ऑबिचुअरी, दिस इज द न्यूज फ्रॉम लाइक 11 to 13 और मे बी बिफोर दैट एज वेल। तो ये मेरे बाथरूम में होगी, ठीक है। स्पोर्ट्स ऑबिचुअरी में क्या है? CD गोपीनाथ जो थे वो ही वाज द लॉन्गेस्ट लिविंग, लाइक ही वाज द ओल्डेस्ट लिविंग, ओके, he was the oldest living cricketer, and he passed away at 96, and he is now the oldest living Indian test cricketer. Okay, sorry. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज इन हेल्थ। वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है वो अप्रैल 10 को कंसिडर किया जाता है, सॉरी, commemorates the birth of Dr. Samuel Hahnemann, founder of homeopathy। 2026 की थीम क्या है? होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। ठीक है, ये जो डे है जो 10th अप्रैल है, अभी जैसे 14th अप्रैल इट वाज लास्ट लाइक yesterday, these days are important as well, like previous year it was the first time that we had considered Ambedkar Jayanti as the holiday. Okay, so it was necessary, and last year I think the questions revolved around it a lot, and it is necessary to consider these dates as there are a few questions that come through it, and just remembering these days is important for us as Indians. Okay, now these are the news that we are going to understand between 13 and 14. Okay, this is not 15th tarikh ka news because nothing has happened yet. Now it will happen, so we will consider it tomorrow. But these are the news, these are the events that happened on 13 and 14 April. Now why have I taken 13 and 14? Because I was unable to come on Monday and Tuesday, so it is important for me so that I cover the syllabus that I have not completed yet. So these are the international affairs and global economy ka pura jo bhi event that has happened. Now let me tell you one thing. This is the headline. I will tell you the format that how we are going to study this. This is the headline that news के सामने ब्रेकिंग न्यूज जो है वो है ये। इसके बाद हमारे पास जो एक्चुअल इवेंट हुआ है, जो एक्चुअल बात हुई है, जो आप क्या बोलोगे जो कोर इवेंट है, हम लोग वो रीड करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे हुई थी और इस कारणों से हुई थी। दैट इज द कंप्लीट थिंग। नाउ द बैकग्राउंड एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट यू विल अंडरस्टैंड आफ्टर दैट। ओके, एंड अनदर थिंग, द कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड थिंग इज ऑल अप टू यू। ठीक है, मैं पूरी तरीके से आपको बर्डन नहीं करना चाहती हूँ, बट इट इज नेसेसरी दैट यू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो बैकग्राउंड वाली, जो कॉन्टेक्स्ट वाली चीजें हैं, दैट इज समथिंग दैट इफ आई स्टार्ट टीचिंग दिस इज अ 5-hour class. Okay, and if you do it on your own, this is 1-hour class and you will sit for 1 hour, because I have to make you understand single word that you don't understand, and
considering that I am a teacher, I will do it. So 5 hours for me, 2 hours for you. It is up to you how what you use, and you can comment it down below that whatever you need, I am here for you. तो अगर आप बोलोगे 5 घंटे की क्लास, why not? ओके यहाँ पर है इवेंट का ओवरव्यू और कॉन्टेक्स्ट. द होस्टिंग, क्या होस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, पहले वो देखोगे. सॉरी, इंडिया होस्ट ब्रिक्स एंगेजमेंट टू मीडिएट ईरान यूएई टेंशंस. ठीक है, अभी बहुत सारे टेंशंस बहुत सारी कंट्रीज के बीच चल रही है. सारी कंट्रीज के बीच में एक चीज कॉमन है, problems are within Iran, Israel, USA, UAE. These are the matters that are coming up a lot. Ukraine, Russia, that is also happening. So everything is happening all at once, and there is just too many news to cover. So the best thing that you can do is every day cover the news. Okay. इफ यू सेट कि हाँ यार ये जब वॉर खत्म हो जाएगी तब मैं बैठ करके पूरा न्यूज पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, देन देयर इज नथिंग, नो वन कैन हेल्प यू, नॉट इवन मी. ओके, अब देखो इंडिया ने क्या किया है, होस्ट करने के लिए तैयार है इंडिया. फॉर व्हाट? फॉर ब्रिक्स. नाउ व्हाट ब्रिक्स इज, व्हाट इज दैट, नाउ वी विल स्टडी हियर. द होस्टिंग इंडिया एज द ब्रिक्स. ब्रिक्स इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. And chair for 2026 is hosting a high level meeting in New Delhi. यहाँ पर एक high level meeting होने वाली है, न्यू दिल्ली में होने वाली है. For what? This marks the first direct face-to-face diplomatic engagement between Iran and the UAE, United Arab Emirates, since the recent escalation of conflict in West Asia. Now, ईरान और यूएई के बीच में भी जो टेंशन चल रही थी, उसके बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू बी फेस टू फेस, एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट द एस्केलेशन दैट टुक प्लेस इन द वेस्ट एशिया about the conflict. So now this is the first time that there will be a diplomatic meeting between them. Objective to reopen diplomatic channels and reduce regional friction through a multilateral framework. अब क्या है, ये जो डिप्लोमेटिक चैनल्स और डिप्लोमेसी की बातें बार बार होते रहती है न्यूज में, आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट डिप्लोमेसी इज नॉट it is not an acting sort of thing. It is an agreement between two countries so that those countries live peacefully together in harmony. Okay, I understand there is a diplomatic relation between us and China. There is a diplomatic relationship between Nepal and us, but both the diplomatic relations are not the same, right? You understand that, I understand that, the nation understands that, but this is completely due to the war escalation, right? And this war thing is getting out of hand right now, and maybe it is covering up a little bit, or they are covering up the pace a little bit, but I don't think this is not as bad as I thought it would be, and I think this diplomatic thing will actually change lives. Now, regional security and economic impact. What the regional security and economic impact will be on it? See, I know this news is to be understood by you only, okay? But this is the first news, and I want to make sure that you understand what is written here. So I will be teaching you this, but after this, I will be reading the headline, what the main thing is, and I will be moving on, okay? You have to see what the words are, what the keywords are, what the letters are written in bold, what the things are as in abbreviation in small form, so you can understand it better. And whenever you are making notes, the bold word should be underlined completely, okay? Now, key discussion areas kya hai? The talks will cover regional stability in Palestine, Syria, Yemen and Lebanon. नाउ ये डिस्कशन के एरियाज हैं जो जब ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है तो उस बीच में क्या होगा, ये सारी चीजों को डिस्कवर किया इनको कवर किया जाएगा. ग्लोबल ऑयल कंसर्न, अ मेजर फोकस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, critical global oil transit choke point. Any disruption here directly impacts global energy prices and increases inflationary pressures. ये बहुत ज़्यादा important है. As in India also this was happening, cylinder का दाम and
whatever the problems we were facing. So this is very important to understand कि ये वाला जो ब्रिक्स का जो मीटिंग होने वाला है, this is very important for Iran, for UAE and especially for India. Okay, a key concern for Reserve Bank of India and global banks. चोक पॉइंट इंपॉर्टेंस क्या है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है एक नैरो स्ट्रिप है बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल बिकॉज वी हैव बीन डिस्कसिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अ लॉट. सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज. तो अब हमको पता नहीं है क्या है और हम लोग बस इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करके पढ़ लिए हैं तो दैट इज नॉट करेक्ट. यू हैव टू हैव करेक्ट सोर्सेज टू अंडरस्टैंड व्हाट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज. ओके, ये क्या है, एक नैरो स्ट्रिप है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में. इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल ट्रांजिट रूट हैंडलिंग 20 to 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल कंजप्शन. ये 20 से 30% जो कंजप्शन है ग्लोबल ऑयल का वो यहाँ पर एट स्टेक है. सो दिस ब्रिक्स मीटिंग कुड एक्चुअली चेंज अ फ्यू थिंग्स. Now, this is the new news, okay? Peter Magyar ends Viktor Orban's 16-year rule in Hungary. Now, why this is important? This is a geopolitical news. Now, this why we are studying this, why we are not studying this, I don't think that is the matter. The matter is why this is happening and how you are going to make notes of it. So, you have to make sure कि आपको जो यहाँ पर bold चीजें हैं वो समझ में आए. And further, we will understand why this was as important to put in slides. In a historic landslide victory, Peter Magyar and his TISA party have defeated Viktor Orban and the long dominant Fidesz party. Now, क्या हुआ है? विक्टर ऑर्बान एक जगह के लीडर हैं, ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर हैं और ये जो प्राइम मिनिस्टर थे वो 16 इयर्स से रूल कर रहे थे उस कंट्री पे. एंड नाउ पीटर magyar ने क्या किया है, उन्होंने उनको मतलब रिप्लेस किया है. नाउ ही इज द प्राइम मिनिस्टर. ओके, this ends Orban's 16-year tenure as prime minister, making the most significant political shift in Hungary since the fall of communism. Okay, Viktor Orban was the longest serving prime minister in the EU. His removal is not just a change in leader but a change in system. ठीक है, आप ये चीज को समझो. ये this is an opinion, okay? This is not news. This line is not a news. This is an opinion. What we think, what you think, what the nation should think. Okay? तो यहाँ पर क्या है, विक्टर ऑर्बान की जो चेंज हुआ है, this is not just a change in leader, but it is change in the system. And how beautifully well put. ठीक है, क्योंकि आप एक कंट्री को 16 ईयर से सेम वे में देख रहे हो एंड नाउ सडनली देयर इज सम अदर लीडर, सम अदर पार्टी who have different morals, they have different principles, and now how they will work, how they will rule, that is something very interesting for us as a geopolitical view. The mandate is given, the transition is given, the reform agenda is given. यहाँ पर ये जो चीजें हैं, this is to be read by you yourself. And geopolitical and economical shift, इससे हमारे बीच में क्या changes आने वाले हैं, that we have to understand. यूरोपियन यूनियन जो है उनके बीच में क्या रिलेशन है? अंडर ओरबान, Hungary often clashed with the European Union. Magyar has signaled a move toward closer alignment with the European partners. इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक ऐसा मूव लेने का सिग्नल किया है, ऐसा बताया है, ऐसा बोला है that he will have closer alignment with the European partners. Foreign policy क्या है? A major reassessment of the ties with Russia is expected, shifting Hungary's stance on regional security and energy dependency. अब उसके साथ क्या है? एक reassessment भी होगी with Russia. Okay. Next, Major General Roman Govt appointed as new chief of Mossad. अब ये भी important है, appointments जितनी है वो सब important है. I mind you कि एक बार आप ये वाली चीज को न्यूज में पढ़ लिए हो, you have to put your pen and paper to work. It is important that you write it, that you understand it, because appointment is very important as a news for the exam perspective. Now, on April 13th, 2026, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu officially appointed Major General Roman Govt as the next head of the Mossad, Israel's national intelligence agency. He will succeed the outgoing chief David Barnea on June 2nd, 2026. ठीक है, अब ये हो गई हमारी पूरी बात, ये क्या है क्या नहीं है. Now what will happen, what is the
background behind it. Now we will understand. An unconventional choice. Roman Goffman is a career military officer. His appointment is considered unconventional because unlike the most previous chiefs, he has no prior background in intelligence services. ठीक है, ये एक अलग चीज है, एक न्यू चीज हो रही है. And what the new things are, you have to make sure that you put it on your notebook. Military career. Born in Belarus, Goffman migrated to Israel in 1990. He is a veteran of the Armored Corps and formerly commanded the National Infantry Training Center. Okay, so he has a military career, that is what we mean. And war hero status, what he did in the past, this is written here. The Israeli intelligence structure. Now, what the Israeli intelligence structure is, this Mossad thing is Israeli intelligence structure. Okay, उन्होंने इंटेलिजेंस को किस तरीके से यूज किया है in accordance to us, how Indian intelligence structure is and how Israeli structure is. If we compare both of them, it will be better for you to understand. So we will compare both of them. यहाँ पे लिखा है the Mossad. What Mossad is? Responsible for foreign intelligence and special operations outside Israel. अब इसराइल के बाद जो भी foreign operations हो रहे होते हैं, that is responsibility of the Mossad. Equivalent to India's raw research and analysis wing. ठीक है, जैसा हमारे यहाँ रॉ है वैसा ही मोसाद है वहां पर. इसके बाद है शिनबेट, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंटेलिजेंस विद इजराइल एंड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज. अब ये क्या है? दिस इज इक्विवेलेंट टू इंडियाज आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो. ठीक है, तो शिनबेट जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के इक्विवेलेंट है, मतलब जैसे इंडिया में आईबी है वहां पर शिनबेट है. इसके बाद है अमन, the military intelligence directorate which provides intelligence to the Israeli defense forces. ये क्या है? एक ऐसा military intelligence directorate है जो कि intelligence यानी कि जो भी information है, जो भी information उनको मिल रही है, वो Israel defense forces को provide करने वाले जो community है, जो committee है, उसको क्या बोलते हैं? अमन बोलते हैं. Now, science and technology or national news. There is science and technology news as well, and we have the national news too. Andhra Pradesh launches India's first indigenous quantum test beds. What these quantum test beds are? On April 14, 2026, celebrated globally as World Quantum Day, the Chief Minister of Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, inaugurated India's first indigenous quantum computing test beds. This move aims to establish Amravati as India's quantum valley. Now, quantum is a lot of thing written on the slide. We don't know what it is. ठीक है, तो ये जो April 14 को quantum day मनाया जा रहा है, this is a science thing. ठीक है, एक डे है quantum day. See, quantum mechanics is a topic in physics, and in quantum mechanics you learn how atoms work, how nuclear thing works, how proton, neutrons and electron works, and that is what quantum is. Now you understand what quantum is. Now what the quantum news is about, you have to see. On April 14, 2026, celebrated globally as World Quantum Day, the Chief Minister of Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, inaugurated India's first indigenous quantum computing test bed. This move aims to establish Amravati as India's quantum valley. ठीक है, इंडिया की सिलिकॉन वैली इज बैंगलोर, एंड नाउ अमरावती विल बी द क्वांटम वैली फॉर इंडिया. The system, two indigenous systems named 1S and 1Q were launched. ये जो दो जो systems हैं वो launch किए गए थे. ठीक है, इसके बाद वाली जो न्यूज है, you have to see it for yourself. If you have time, you can read it right now, or maybe you can take screenshot. The PDF will be available for you in the Telegram channel, so there is no hurry on putting a screenshot for your phone. Okay. नेक्स्ट लोकेशन क्या है? SRM है, श्री राम स्वामी मेमोरियल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश. ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर एक फिजिकल इनॉग्रेशन हुई थी, प्रॉपर इनॉग्रेशन हुआ है. फिर मेधा ट्रावर्स नियर विजयवाड़ा वर्चुअल इनॉग्रेशन हुआ था. सॉरी. सपोर्टिंग बॉडीज क्या है? द प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड बाय द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, the Institute of Science, IISc, and the Defense Research and Development Organization, DRDO. These organizations are actually, I feel कि इंडिया में जितने भी साइंस प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें सपोर्टिंग बॉडीज होती हैं, and wherever there is a breakthrough, I see DRDO a lot. So you have to understand that DRDO is an important body for your exam perspective. Okay.
Sorry, just a second, okay? ओके यहाँ पर क्या है, आंध्र प्रदेश वाली जो न्यूज थी, स्ट्रेटेजिक और इम्पोर्टेंस क्या है और नेशनल मिशन क्या है वो देख लो। क्वांटम मिशन क्या है, नेशनल क्वांटम मिशन क्या है, एक इनिशिएटिव है डायरेक्टली सपोर्ट्स इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन which aims to make India a global leader in quantum technology. See, we have all the resources, we have all the intelligent people in India, but these intelligent people are going out of country to understand and work for other companies because there is a better pay. Okay, so this is really important and a real breakthrough for the people who are intelligent and they have to work in India because it is important that you work for India, right? So this is for them and this is a mission that I support as well. यहाँ पे क्या बोला गया है, ये वाला जो क्वांटम मिशन है वो नेशनल क्वांटम मिशन है। ये इनिशिएटिव जो है, कौन सा इनिशिएटिव, दिस टेस्ट बेड इनिशिएटिव जो वहां पर इनॉग्रेशन हुआ है, वो जो इनिशिएटिव है वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है हमारा नेशनल क्वांटम मिशन। और नेशनल क्वांटम मिशन क्या है, नेशनल क्वांटम मिशन एम्स टू मेक इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन quantum technologies. ठीक है, this is how you read the news. You have to understand why which is used, why what is used. Okay, तो news का reading का जो technique होता है that is a little different than what you have learned before. मतलब बस newspaper को पलटने से कुछ नहीं होता है. Images, I understand. This is a trial class. You have to understand that कि trial class है, थोड़ा सा मैं भी PDF बनाने में आगे पीछे कर सकती हूँ. जो न्यूज होती है वो करेक्टली प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग क्योंकि हम लोग के पास जो मटेरियल है दैट इज वेरी वास्ट. मैं भी आपको दिखाऊंगी, इतनी सारी स्लाइड्स आर लेफ्ट एंड देयर इज स्टिल नो टाइम, द 1 hour पेज वी हैव फिनिश्ड and this is a trial class. I will be sending you the PDF and you have to read it. This is not कि आज मैम जितना पढ़ाए उतना पढ़े फिर कल मैम फिर से पढ़ाएंगी. No, I will cover the next news. This is the PDF that you have to understand and read for yourself. And after this, now जो कल के current affairs होंगे, I will bring it back to you with a little rewind, and you will see these headlines there as well. Okay, so this is a revision class for you too. इसके बाद आप थोड़ा सा इमेजेस देखने लगोगे, बेटर स्लाइड्स देखने लगोगे. ठीक है, दिस इज ट्रायल फॉर मी एंड ट्रायल फॉर यू. आपको भी तो समझना है कि कैसे आप क्लास लेने वाले हो, कैसे करंट अफेयर्स क्लास लेने वाले हो. एंड इट इज इफ इट दिस इज योर फर्स्ट टाइम टेकिंग करंट अफेयर्स क्लास, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी. जो सीरियसली फालतू के नंबर जो होते हैं ना वो एक साथ मिल रहे होते हैं तो करंट अफेयर्स से मिल रहे होते हैं मेंस में. एंड यू हैव टू नो कि अगर आप रीजनिंग पॉइंट इंग्लिश कर रहे हो उसके साथ साथ करंट अफेयर्स इज आल्सो एज इम्पोर्टेंट एज दो सब्जेक्ट्स दैट यू आर स्टडीइंग फॉर योर बैक एंड एग्जाम. ओके, तो ये सब भी कवर करना जरूरी होता है. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस. वी आर स्टार्टिंग द सीरीज. आई नो 2-3 दिन थोड़ा सा इधर उधर हो गया था बट नाउ वी विल कवर अप वेरी सून. ओके, इसके बाद वाली जो न्यूज है वो देखोगे, यहाँ से है जो न्यूज दैट यू हैव टू कवर ऑन योर ओन. यहाँ से मैं दिखा दे रही हूँ, जरूर सारी स्लाइड देख लो आप, आपके पास PDF भी रहेगा, देयर इज नो वो. ठीक है, लेकिन एक बार आप पूरी न्यूज को खुद से देख लोगे. ठीक है, आयुष शेट्टी सिक्योर्स हिस्टोरिक सिल्वर एट द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप. ओके, नेक्स्ट न्यूज इज सावन बरवाल ब्रेक्स इंडियाज 47-year-old मैराथन नेशनल रिकॉर्ड. नेक्स्ट क्या है, फोर्थ लेग ऑफ इंडियन एथलेटिक्स सीरीज रांची में ये सीरीज हुई है. कौन जीता कौन नहीं जीता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बैंकिंग एग्जाम. नेक्स्ट नेशनल न्यूज, इकोनॉमी एंड रिसोर्सेज न्यूज. ओके, इंडिया इंटेंसिफाइज क्रिटिकल मिनरल ऑक्शंस फॉर रिसोर्स सिक्योरिटी. Now, Supreme Court invokes Article 142 to grant divorce and prevent legal misuse. ठीक है, तो अब ये जो आर्टिकल 142 क्या है, कैसे है, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. You have to read it. This is the main headline that will cover everything that the news is about. And after that, this is the context and the background of whatever the news is. Next क्या है, Supreme Court observations
on voting rights and electoral roll revision. Now, why this is important? Because this is about elections. This is about elective rolls, whatever voting thing is going on. ठीक है, तो इसको भी देखोगे आप. नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन्स प्ली फॉर बायोमेट्रिक वोटर वेरिफिकेशन. ठीक है, इन्होंने क्या किया है? प्ली का मतलब क्या होता है जानते हो ना आप? एक आवेदन जो बोलते हैं, वो आवेदन को एग्जामिन किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बारे में बताया हुआ है. नेक्स्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन्स प्रपोजल्स टू मेक प्री प्राइमरी एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट. प्री प्राइमरी एजुकेशन मीनिंग जो आपका KG1 KG2 जो फर्स्ट क्लास है, सॉरी नर्सरी क्लास है, उसके बारे में जो फंडामेंटल राइट है, उसके बारे में भी क्या बोलते हैं, एक एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन इन सुप्रीम कोर्ट. अभी रिसेंट न्यूज ये भी है कि CBSE का जो फ्रेमवर्क है, एजुकेशनल फ्रेमवर्क है, that has changed a lot. The books prices were skyrocketing actually, and there is a lot of change in the syllabus. The students had to learn IT as their main subject. And when I was in school, this was computer science. Okay, computer and science. This was the topic that we had to study. And later, IT was the subjects that the students had to study. And now the new subject that IT, computer science is combined is AI. Okay, and the students that are older than I think 10 years, maybe they are in 4th class. After 4th class, they have to study AI as their main subject. Okay. अब यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया हुआ है, you have to study that also. Next, yesterday was 14th April. Okay, B.R. Ambedkar Jayanti, and what the background of that was, that is the headlines given here. Dr. B.R. Ambedkar's legacy empowers Roma community in Hungary. Now they have also celebrated his Jayanti, the birth anniversary of Dr. Ambedkar. So this is what the headline is about. Next, dual celebration of Ambedkar Jayanti and Baisakhi. So yesterday marked as the Baisakhi for Sikhs and Ambedkar Jayanti as well in India. North Korea tests advanced missiles from Ko-Yeon destroyer. So they are testing advanced missiles from Ko-Yeon, and I don't know this topic is relevant to this, but the war, when the war was going on, a lot of memes were there about Kim Jong-un, about they have to consider for the war. They wanted to enter the war somehow. So I think this is a good topic, and this is not as important, but this is a actual turn point for geopolitical news. Okay. Next, Australia appoints first female army chief in 125-year history. Okay. Next is Nilangar village in Abujmart becomes first to get tap water. Okay. And tap water मतलब पानी आ गया है, that is not the news. The news is about how solar panels were used in making of this tap water, and this is in Chhattisgarh. Okay. Next, Lok Sabha expansion proposal for 850 seats. So there were, I think, lesser seats, 543 seats, and now there is this proposal where 850 seats will be there for Lok Sabha. Next, Uttar Pradesh announces 21% interim wage hike following Noida protests. So there is this previous monthly wage and now new monthly wage. कि आपका monthly wage क्या है? 2000 रुपए almost बढ़ा हुआ है, I think. So that is the news. Next is boiler explosion at Vedanta Thermal Power Plant in Sakti, Chhattisgarh. So Sakti is the new district that is in Chhattisgarh. Okay. So this topic is important and relevant for Chhattisgarh, but other than that, this was a massive explosion which had 10 deaths altogether up till now, and maybe more, I don't know. After this, there is the end of the slides, and you have to see this, read for yourself, see the background, whatever the context of the news is, and it is good for you to understand these current affairs, because जितना आप पढ़ लोगे करंट अफेयर्स, जितना आप उसमें एक्टिव हो जाओगे, उतना ज्यादा आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा. बिकॉज मेंस में जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स और इंग्लिश है. ठीक है, आप क्वांट और रीजनिंग पढ़ो, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि पढ़ना नहीं है, बट दैट इज अ लिटिल लेस प्रायोरिटी वाइज, और जो करंट अफेयर्स और इंग्लिश की प्रायोरिटी है इन मेंस एग्जाम, इट इज मोर देन दैट. ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स को पढ़ो, डेली पढ़ो. सुबह का टाइम इज द बेस्ट टाइम टू नो द न्यूज, टू अंडरस्टैंड व्हाट द न्यूज इज,
और सबसे ज्यादा दिमाग फ्रेश रहता है यार, बस सोच करके रहोगे कि हाँ हमको पढ़ना है, तो आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हो करंट अफेयर्स, ठीक है। और डेली जितना कंसिस्टेंट रहोगे, ठीक है, जितना ज्यादा उतना ज्यादा आपको कवर करने के लिए मिलेगा। एंड आई अंडरस्टैंड कि इतना इंटरैक्टिव क्लास जो है वो ऑनलाइन नहीं हो सकता है, बट ऑफलाइन भी सेम टाइप आप समझ सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन में क्या है कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, बट आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस वर्ड मीन्स, दैट वर्ड मीन्स, what the DRDO is, what the EU is, what the MOU is. So you cannot ask me from there. Okay, there are comments, I understand that, but इतना ज्यादा इंटरैक्टिव नहीं हो पाता है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन क्लास। आप सीधे मेरे से इंटरैक्ट कर सकते हो, मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन टेक फ्रॉम मी, एंड ऑफलाइन क्लासेस आई थिंक दे आर वे बेटर देन दिस, और मे बी दिस इज द न्यू थिंग दैट वी आर डूइंग, and this is the first time that we are taking the trial class for current affairs. Maybe that is our opinion for now, but maybe this can change later. I don't know. I just know that studying is important for banking exam, and you have to take your stand for it. Okay, so with this note we will conclude this class. Take care. Bye bye.